गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक की लोकेशंस पर जो है रेड की है। कीरू हाइडल प्रोजेक्ट से रिलेटेड करप्शन जो है पाई गई थी, उससे रिलेटेड ये रेड्स की जा रही हैं। तो हम देखेंगे कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट है क्या। एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है जो कि चेनाब रिवर पर बनाई जा रही है किश्तवाड़ तहसील में, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है 3 कंपनीज़ का, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिली थी 2008 में, और जो इन्वायरमेंट जो है कि क्लियरेंस जो एग्जैक्ट में मिली वो 2016 में मिली। जो अप्लाई की गई थी 2008 में की गई थी। और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का 2019 में रखा गया, और कहा जा रहा है कि ये 2025 से अपने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम बेनिफिट्स देखें इसके, तो एनर्जी डेफिशिएंसी जो है नॉर्दर्न रीजन की, उसको एड्रेस करेगा। डिपेंडेंसी जो है लोकल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, उसको रिड्यूस करेगा। फिर स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रीजन को भी जो है वो इंक्रीज पावर सप्लाई मिल सकेगी, ठीक है, जिससे जॉब्स और रेवेन्यू आएंगे लोकल्स के लिए। तो करप्शन के एलिगेशंस हैं क्या। तो सत्यपाल मलिक जो उस टाइम पर गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि उनको 300 करोड़ की ब्राइब ऑफर की गई 2 फाइल्स क्लियर करने के लिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो 2022 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सीबीआई प्रोब की डिमांड करी इससे रिलेटेड, और सिविल वर्क्स जो दिए गए थे उस पर क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। तो एफआईआर भी जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा और पावर डिपार्टमेंट द्वारा। एफआईआर में एलेज किया गया कि गाइडलाइंस जो थी ई टेंडरिंग की वो फॉलो नहीं की गई, और सब स्टैंडर्ड वर्क जो है वो किया गया, जिसकी वजह से जो है लोकल जो यूथ है उनको भी जॉब्स नहीं मिल पाई, और जो है ये प्रोजेक्ट पे जो है वो काम भी ठीक से नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सरोगेसी। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक न्यू होप आई है कपल्स के लिए जो कि एक सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बनना चाहते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरोगेसी रूल्स 2022 को अमेंड कर दिया है, और एक डोनर गैमेट जो है वो अलाउ कर दिया है। ओवा, एग सेल्स या स्पर्म जो है वो एक डोनर दे सकता है। तो मैरिड कपल्स जो हैं, जो कि सरोगेसी के थ्रू डोनर गैमेट्स जो है वो लेना चाहते हैं, वो अब ले सकेंगे, क्योंकि सरोगेसी रूल्स को अमेंड कर दिया गया है सरोगेसी एक्ट के अंदर जो रूल्स इशू किए गए थे। लेकिन ये याद रखो कि इसके अंदर जो है कहा गया है कि सिर्फ एक ही पार्टनर जो है वो यूज़ कर सकता है डोनर गैमेट। मतलब कम से कम एक पार्टनर का जो है वो जो है जो एग्स हैं वो यूज़ करने ही पड़ेंगे। मतलब दोनों ही जो है पार्टनर्स, जो सरोगेसी में दोनों पार्टनर्स जो है, जो मदर और फादर होंगे, उनमें से एक के तो सेल्स यूज़ होंगे ही, या फिर एग्स यूज़ होंगे ही। बाहर से एक डोनर सिर्फ हो सकता है, ठीक है। और अपने सेल्स बेसिकली उनको यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर अपने गैमेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोर्ड अगर सर्टिफाई करता है कि आइदर हस्बैंड या वाइफ किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ तभी ये डोनर जो है वो गैमेट जो है वो दे सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइंस के बाद ही ये एग्जिस्टिंग रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। सरोगेसी क्या होती है। बेसिकली सरोगेट मतलब का होता है जेस्टेशनल कैरियर, जिसमें एक वुमेन जो कंसीव करती है, कैरी करती है और बर्थ देती है एक चाइल्ड को किसी और कपल के लिए, उसको हम सरोगेसी कहते हैं। तो 2 तरह की सरोगेसी हो सकती है, कमर्शियल और ऑल्ट्रुइस्टिक। कमर्शियल में तो मतलब पैसा लेकर जो है कोई मदर ऐसा कर रही है जो सरोगेट बनने को तैयार हुई है। ऑल्ट्रुइस्टिक में क्या होता है, कोई पैसा नहीं लिया गया है, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस कवरेज जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है वो दी गई है, कोई पैसा नहीं लिया गया है, और आउट ऑफ ओन वॉल्यूशन कोई पर्सन कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई नियर रिलेटिव भी हो सकता है इस केस में। सरोगेसी तो है 1978 से इंडिया में बहुत प्रैक्टिस की जाती है। बहुत हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टूरिज्म है इंडिया में। कमर्शियल से सरोगेसी को लीगल कर दिया गया था, लेकिन कोई रूल नहीं बनाए गए थे। उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सरोगेसी इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ी, और लो कॉस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है वो सामने आने लगे। इसीलिए 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दी, और कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया। तो अगर हम देखें सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर, इसमें कमर्शियल सरोगेसी बैन है, सिर्फ ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी हो सकती है।
जो कपल्स प्रूवन इनफर्टिलिटी से डील कर रहे हैं, ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी हो सकती है, ठीक है। और जो है अगर कोई डिसीज़ है तो भी ऑफ कोर्स उसके केस में भी जो है सरोगेसी अलाउ की जा सकती है। किसके द्वारा? एक क्लोज रिलेटिव हो सकता है इंटेंडिंग कपल का, एक जो 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 मैरिड जो जो सरोगेसी करेगी जो मदर, वो हम मैरिड होनी चाहिए, और उनका खुद का चाइल्ड भी होना चाहिए, 25 से 35 की एज होनी चाहिए, और उससे पहले उन्होंने कभी सरोगेसी नहीं की होनी चाहिए। सरोगेट मदर जो है वो अपने गैमीट्स जो है वो सरोगेसी के लिए नहीं दे सकती, ठीक है। सो अब इसी एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर सरोगेसी बोर्ड्स बनाए जाएं, ठीक है। फिर पेनल्टीज़ मेंशन की गई हैं कि अगर समझ लो कमर्शियल सरोगेसी कोई करता है तो उससे रिलेटेड क्या पेनल्टीज़ होंगी, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिंघभूम क्रेटन। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एंशियंट क्रेटन्स को स्टडी करते हुए, जैसे सिंघभूम क्रेटन जो है इंडिया में, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उससे हमारे प्लानट के फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में हमें ग्लिम्पसेस मिलते हैं, ठीक है। तो सिंघभूम क्रेटन जो है वो वास्ट स्वेथ ऑफ रॉकी लैंड है जो झारखंड और उड़ीसा के बीच में है, खासकर छोटा नागपुर प्लेटू और ईस्टर्न घाट्स के बीच में। ये एंशियंट पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट है जो कि लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था। और ये जो है इधर ओल्डेस्ट रॉक असेंबलेजेस मिलते हैं हमें, लार्जली वॉल्केनिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको हम ग्रीन स्टोन सक्सेशंस भी कहते हैं। तो जो ये ग्रीन स्टोन्स हैं ये सबमरीन वॉल्केनिक रॉक्स और कुछ माइनर सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हैं। तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है इनको स्टडी करने की? इससे हमें अर्थ की अर्ली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगता है, यूनिक जियोग्राफिकल फीचर जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पता लगता है, इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस से के बारे में। तो ये क्रूशियल है अर्ली हैबिटेबल कंडीशंस और इमरजेंस ऑफ लाइफ के ऊपर के बारे में, ठीक है। तो क्रेटन्स क्या होते हैं? क्रेटन्स ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट है। ये पीसीज ऑफ एंशियंट कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स को पहले बने हैं, और ये एक विंडो देते हैं हमें कि कैसे सरफेस ऑफ अर्थ ने ऑपरेट किया है इन द पास्ट, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेविगेट भारत पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने 4 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं, प्रेस सेवा, नेशनल रजिस्टर फॉर एलसीओज, सीबीसी और नेविगेट भारत। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेविगेट भारत पोर्टल है, जो कि नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत है। न्यू मीडिया विंग ने MIB के इसको डेवलप किया है। एक यूनिफाइड बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म बनाकर दिया गया है जिसमें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो यहाँ पर डाली जाएंगी, जिसको सर्च, स्ट्रीम, शेयर, डाउनलोड किया जा सकेगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड ये वीडियोस होंगी, कैंपेन्स होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, जिनको आगे शेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही प्रेस सेवा पोर्टल है जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट के अंदर बनाई गई है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है पब्लिशर्स का, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। ऐसे ही 2 अदर पोर्टल्स भी हैं, उनके बारे में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रानी चेन्नम्मा। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सोशल ग्रुप्स ने कंट्री में नेशनल कैंपेन नानू रानी चेन्नम्मा जो है अभी चलाया था, ताकि 200 ईयर्स ऑफ रानी चेन्नम्माज रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमेमोरेट किया जा सके। तो रानी चेन्नम्मा काकटी में बॉर्न हुई, और ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पड़ता है ये एरिया। इनकी जो है मैरिज राजा मलासा राजा ऑफ देसाई फैमिली से हुई, और जब उनकी डेथ हो गई राजा की, तो उनके जो एल्डेस्ट सन थे शिवालिंग रुद्र सरजा, वो थ्रोन पर आए। लेकिन जब इन्होंने जो है चाइल्ड को अडॉप्ट किया, तो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको उस चाइल्ड को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया एज सक्सेसर बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जो है किट्टूर रिबेलियन हुआ। जॉन ठाकरे जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे धारवाड़ में, उन्होंने अटैक कर दिया कित्तूर के ऊपर, और जो फर्स्ट बैटल ऑफ जो थी उसमें ब्रिटिश फोर्सेस बहुत बुरी तरह से हारी। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने दोबारा अटैक किया कित्तूर फोर्ट पर, उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद रानी चेन्नम्मा और उनकी फैमिली को जो है इम्प्रिजन करके जेल कर दिया गया। वहाँ पर जब है उसी जेल में जो है उनकी डेथ हो गई 1829 में। अब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी ब्रिटिश का पॉलिसी, कि जिस भी प्रिंसली स्टेट का कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब अगर उनका कोई अपना बच्चा नहीं है, बायोलॉजिकल चाइल्ड किसी भी जो है राजा का, तो
जो है वो कोलैप्स कर हो जाएगी वो प्रिंसली स्टेट, और उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज दोस्ती। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया और श्रीलंकन कोस्ट गार्ड शिप्स जो है वो मालदीव्स पहुंची हैं वे रिसेंटली ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16 के लिए। तो ये एक्सरसाइज दोस्ती जो है ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। बायनियल एक्सरसाइज है, सबसे पहली बार 1991 में इसको कंडक्ट किया गया इंडिया मालदीव्स के बीच में, और श्रीलंका ने 2012 में इसको ज्वाइन किया। तो ऑफ कोर्स ये हमारी फ्रेंडशिप फोर्टिफाई करने के लिए, म्यूचुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी एक्सरसाइज करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। 16th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज है जो अभी करंटली हो रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने रिसेंटली एक्विजिशन ऑफ 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो उसको क्लियर कर दिया है। तो कैबिनेट कमेटीज़ क्या होती हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, ताकि इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कैबिनेट के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। जैसी नवी गवर्नमेंट बनती है तो ये कॉन्स्टिट्यूट या रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर ही इनको बनाते हैं। एक जनरली एक कैबिनेट कमेटी में 3 से 8 मेंबर्स होते हैं जो कि मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, पर याद रखो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं एज मेंबर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितनी भी कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं वो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं या फिर कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें। ठीक है, तो टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज़ हैं अभी तक हमारे इंडिया में। ऑल कमेटीज़ जो हैं वो मोस्टली इस टाइम पर जो है प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, लेकिन इस टाइम पर कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है। तो ये हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है ऑफ कोर्स, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है डिफेंस पॉलिसी और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या जितने भी मैटर्स ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी हैं यही डिसीजन लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं। तो हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो यही डील करती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई कंट्री में हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, वो भी कैबिनेट कमेटी ही ऑन सिक्योरिटी ही डील करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टुपोलेव 160M। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रशियन प्रेसिडेंट ने न्यूली मॉडर्नाइज टुपोलेव 160M न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रेटजिक बॉम्बर जो है वो कजान एविएशन प्लांट में अनवील किया है। तो ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ कोल्ड वॉर एरा बॉम्बर है। इसको रशिया में वाइट स्वैन भी कहते हैं। एक सुपरसोनिक जो है ये मिसाइल कैरिंग बॉम्बर है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट फ्लाइंग सुपरसोनिक और हैवीएस्ट पेलोड कैरिंग बॉम्बर है। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ही वेपन्स को जो है ये हिट कर सकता है। ऑफ कोर्स 12,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। 4 टर्बोफैन इंजन्स द्वारा ये पावर्ड है, और इसको इवन मिड फ्लाइट भी जो है या इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग भी इसमें की जा सकती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Kiru Hydel project. This topic is important for your economy section. So CBI has recently conducted raids at locations linked to former J&K Governor Satyapal Malik, because the agency is investigating corruption allegations in the award of a contract for this Kiru Hydel project, which is present in Jammu Kashmir's Kishtwar district. Okay, so this Kiru hydroelectric power project is a run-of-the-river scheme which is being developed over Chenab River in Kishtwar district, Kishtwar Tehsil of Doda district of Jammu Kashmir. And this project is being developed by Chenab Valley Power Projects, which is a joint venture between NHPC, JKSPDC and PTC. Okay, so the award for environment clearance was applied in 2008, and environmental clearance was given in 2016, and the project received approval from state also in 2019. So the foundation stone for this project was laid in 2019, and the deadline for initiating commercial operations is July 2025. So what will be the benefits of this project? So of course it will address the energy deficiency of northern region of India. It will also reduce the dependency of the locals on alternative sources of energy. It will enhance the development
development of small scale and cottage industries also in the region. Okay, so what are the allegations of corruption? So Satyapal Malik, who was the then governor of Jammu Kashmir, alleged that he was offered 300 crore rupees bribe for clearing two files, including one pertaining to this project. So in 2022, Jammu Kashmir government asked for a CBI probe into alleged malpractices in the awarding of two government contracts. So the award of civil works have been called into question. So FIR also says that an investigation has been conducted by J&K Anti-Corruption Bureau and Power Department, and FIR also says that the guidelines for e-tendering in the awarding of civil works were not followed also. There are also allegations of substandard work and failure to provide jobs to local youth against the by this Heidel project. So the next topic is surrogacy. This topic is important for your social issues. So there is new hope for couples who are dreaming to become parents via surrogacy, because central government has amended the surrogacy rules of 2022, and it has allowed the use of a donor gamete, ova or egg cells and sperm. Okay, so central government has modified the surrogacy rules to permit married couples opting for surrogacy to use donor gametes, and Surrogacy Regulation Act of 2021 had earlier restricted married couples from getting donor gametes. So the fresh notification has been issued, and it has said that couples undergoing surrogacy must use their own gametes for having a surrogate child, but district magistrate board should certify that either husband or wife suffers from a medical condition. Only then the couple can use a donor gamete. But this notification allows only one of the two partners, either wife or husband, to use a donor gamete, and the child who will be born to the through surrogacy must have at least one gamete from the intending parents. Okay, so these modifications in the surrogacy rules by the central government came down after Supreme Court doubted the correctness of the existing rules. Okay, so what is surrogacy? It is also known as the gestational carrier. So it is a woman who conceives, carries and gives birth to a child for another person or couple, or what we call intended parents. So there are two types of surrogacies: commercial surrogacy, which is meant for a monetary benefit or reward in cash or kind. Then there is altruistic surrogacy also, which involves no monetary compensation to the surrogate mother other than the medical expenses and insurance coverage during the pregnancy. So if we look at the status of surrogacy in India, then since 1978, surrogacy has been practiced in India, which is also known for having a high rate of reproductive tourism and being a burgeoning hub of the fertility industry. Although commercial surrogacy was made legal, no bill or explicit rule was created and put into effect. So this led to a sharp rise in uncontrolled surrogacy in India by low-cost fertility clinics. Subsequently, in 2021, President of India also gave assent to the Surrogacy Regulation Bill of 2021, which was passed by the Parliament. So what are the key provisions of the Surrogacy Act of 2021? So this prohibits commercial surrogacy and only allows altruistic surrogacy. So it permits surrogacy when it is for intending couples who are suffering from proven infertility. If it is altruistic, it is not for commercial purposes, not for producing children for sale, prostitution, other forms of exploitation, and for any other condition or disease specified through regulations. So if we look at the eligibility criteria for surrogate mother, she should be a close relative of the couple. She should be an ever married woman having a child of her own. She should be between 25 to 35 years of age. She should not have been a surrogate mother earlier, and she should have a certificate of medical and psychological fitness also. Also, the surrogate mother cannot provide her own gametes for surrogacy. Okay, this act also provides for the central and state governments to constitute national and state surrogacy boards respectively. Okay, it also provides for penalties in case of violation of the rules, like if some couple goes for commercial surrogacy. Okay, so the next topic is Singh Bhum Craton. This topic is important for your environment section. So studying ancient cratons like the Singh Bhum Craton in India and their counterparts in South Africa and Australia, unprecedented glimpses have been
offered into our planet's formative years. So, what is Singhbhum Craton? It is a vast swath of rocky land which stretches mainly across the areas of Jharkhand and Odisha between Chota Nagpur Plateau and the Eastern Ghats. So, it is an ancient part of Earth's crust which has found in previous research to date back to 3.5 billion years ago. This craton's oldest rock assemblages are largely volcanic and sedimentary rocks, also known as greenstone successions. So these greenstones are rock assemblages which are made up mostly of submarine volcanic rocks with minor sedimentary rocks. So they offer a clearer picture of Earth's early tectonic activities. They also offer unique geological features, and they provide invaluable information about Earth's surface and atmospheric processes. So this is crucial for hypothesizing the early habitable conditions and emergence of life on Earth. Okay, so what are cratons? So these are the oldest and most stable parts of Earth's crust, and they are pieces of ancient continents which formed billions of years ago. And studying them offers a window into how processes within and on the surface of Earth operated in the past. Okay, so the next topic is Navigate Bharat portal. This topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Information and Broadcasting has launched 4 portals: Press Seva, National Register for LCOs, CBC, and Navigate Bharat. Navigate Bharat is the important one here, which is the National Video Gateway of Bharat, which has been developed by a new media wing of Ministry of Information and Broadcasting. It is a unified bilingual platform which also hosts videos on the entire gamut of government's development related and citizen welfare oriented measures. So it empowers citizens by providing a single platform with an interactive user face so as to search, stream, share, and download videos related to various government schemes, initiatives, and campaigns. So what is Press Seva portal? It is developed under the Press and Registration of Periodicals Act of 2023. It has been developed by the Press Registrar General of India. The portal will simplify the cumbersome registration procedures which were prevalent under the previous Colonial Act of 1867. Okay, so there are 2 other portals for LCOs and for CBC. You can read it here. So the next topic is Rani Chennamma. This topic is important for your art and culture section. So recently, several social groups across the country have organized a national campaign, Nanu Rani Chennamma, to commemorate 200 years of Rani Chennamma's rebellion against the British East India Company. So she was born in Kakati, which is a small village in today's Belagavi district of Karnataka. She became the Queen of Kittur, which is now in Karnataka, when she married Raja Malasarja of the Sai family. So after the death of Raja, his eldest son Shivalingaruda Rudra Sarja ascended the throne, and before his death, the this eldest son adopted a child as the successor, but the British East India Company refused to recognize this child under the doctrine of lapse policy. So John Thackeray, the British official at Dharwad, launched an attack on Kittur in 1824. So the British lost badly in the first battle, but again British army attacked the Kittur fort and captured it. Rani Chennamma and her family were imprisoned and jailed, where she died in 1829. So what was this doctrine of lapse? So under this policy, any princely state without a natural heir would collapse and it would be annexed by the company. Okay. So the princely state of Kittur was taken over by the British East India Company in 1824 by imposing this doctrine of lapse. Okay, even before it was officially launched by the Lord Dalhousie, that is the Governor General of East India Company, between 1848 and 1856. So the next topic is exercise dosti. This topic is important for your security section. So Indian and Sri Lankan Coast Guard ships have reached Maldives recently to take part in the trilateral Coast Guard exercise Dosti 16, which is conducted between India, Sri Lanka, and Maldives. So it's a biennial exercise. It was first conducted in 1991 between India and Maldives Coast Guards. Sri Lanka joined this exercise for the first time in 2012. The aim of this exercise is to fortify the friendship, enhance mutual operational capabilities, and exercise interoperability between the participating countries. And this is the 16th edition of this exercise.
So the next topic is Cabinet Committee on Security. This topic is again important for your security section. So Cabinet Committee on Security has recently cleared the acquisition of over 200 BrahMos extended range supersonic cruise missiles for deployment on its warships. So what are cabinet committees? So these are extra constitutional, which means that they are not mentioned in the Constitution of India, and they are designed to reduce the burden on the union cabinet. They are constituted or reconstituted when the new government takes over or the cabinet undergoes a reshuffle. So the prime minister constitutes these committees, and they generally have 3 to 8 members, which typically consist of only cabinet members. But remember, non-cabinet ministers can also be appointed as members to these committees. Okay. Most of these committees are chaired by the Prime Minister or a senior cabinet minister, and if the Prime Minister is a committee member, he will be the head of that committee. So there are a total of 8 cabinet committees which are listed here, and presently all committees except the Cabinet Committee on Accommodation and the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs are headed by the Prime Minister. So what is the Cabinet Committee on Security? It is headed by the Prime Minister, and it makes all the important decisions on defense policy and expenditure and generally all matters of India's security. So it has Prime Minister, Defense Minister, Home Minister, Finance Minister, and External Affairs Minister as the members, and it deals with all issues related to the defense and security of India and any other issues which are related to the law and order of our country and the national security. It also deals with policy matters of foreign affairs, which have a bearing on the internal or external security of India. Okay, it also discusses the political issues which can impact our security and any manpower of the national security bodies and the required changes to deal with it, and any expenditure or capital expenditure of more than 1000 crore also with respect to defense ministry is also dealt by this cabinet committee on security, and any other issue related to atomic energy is also dealt by it. Okay, so the next topic is Tupolev Tu-160M. This topic is important for your security section. So Russian president has recently unveiled the modernized Tupolev Tu-160M nuclear capable strategic bomber at Kazan aviation plant. It is a modernized version of a Cold War era bomber that the former Soviet Union would have deployed in the event of a nuclear war to deliver weapons at long distances. So it is called White Swan in Russia, and Russia claims it is the world's fastest flying supersonic and heaviest payload carrying bomber. It is designed to hit targets in remote areas with nuclear and conventional weapons. So it can fly 12,000 kilometers non-stop without refueling, and it is powered by 4 afterburning turbofan engines. It also has refueling probe for in-flight refueling also. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.